Good morning, students. It's a pleasure having all of you present here in the live class. That's really awesome. So let's just continue with the class. The information of the class first is November 18, 2020, class 8th, subject English. And the book we are reading is Communicate with Cambridge. Sorry. Unit 5, Section C of the book Communicate with Cambridge. Unit 5 is the marvels of medicine we have been reading since we started from the very beginning. Section C is that just a little bit. This is going to hurt just a little bit. You can understand by this title, which is very humorous. See, the warm-up question is given. This is a picture of a few dental instruments. What do they remind you of? ये जो है किस चीज के बारे में आपको रिमाइंड कराते हैं जब आप ये इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं? Well, of course, these instruments remind us about the dentist. These sorts of instruments are used by the dentist. So that's very important point, students. We are supposed to be a bit conscious. So let's just have a reading of the text or the poem, basically, text of the poem. One thing I like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open, and that I will never have to do it again is a hope. That I am against hopen. Well, students, this is going to hurt just a little bit, is a humorous poem by Ogden Nash. Ogden Nash is the poet of the poem. I didn't discuss before starting because I knew that I would use it here. So Ogden Nash is the poet who has written this in a humorous way. Humorous way means जिसको हम बोलते हैं, either you call it a pulling leg of the one और मजाकिया वे में इसको explain करना, right? So one thing I like less than most things is sitting in a dentist chair. See what happens here. It's a humorous poem through exaggeration and overstatements. Exaggeration means बढ़ा चढ़ा करके बातों को बताना. Over statements, बहुत ज़्यादा over कर देना statements को. He makes fun of the dentist. Ogden Nash जो है making fun of the dentist, वो dentist का fun बना रहे हैं, and his methods of treatment. How the dentist do the checkup, his sort of activities which are taking place when you visit to the dentist, how he treats, his methods of treatment. The poet begins by saying that he does not like to sit in a dentist's chair. अगर हम बात करें तो पोएट कहता है कि वो डेंटिस्ट की चेयर पर बैठना पसंद नहीं करता है. With his wide open mouth, अपने माउथ को ओपन करके खोल के बैठ जाना. It is ridiculous and painful. वो कहता है कि तो बिल्कुल ridiculous, बकवास है, painful है. Every time he leaves the dentist clinic, और हर बार जब वो डेंटिस्ट के क्लिनिक से जा रहा होता है, वहाँ से जाता है,
चेकअप कराने के बाद ही होप्स नेवर टू कम बैक अगेन, और होप की बात करता है, हैव टू डू इट अगेन इज अ होप, और वो क्या कहता है, ही होप्स नेवर टू कम बैक अगेन, वो कभी भी वापस नहीं आना चाहता है उस शॉप पर, डेंटिस्ट के क्लिनिक पर, बट ही हैज़ टू विजिट द डेंटिस्ट अगेन एंड अगेन, बार बार जो है उसको डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है, अगेन एंड अगेन, ऑल हिज होप्स टू कीप हिज टीथ इन गुड कंडीशन, अपने दांतों को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए उसको वहां पर वापस आना पड़ता है, बिकॉज some tortures are physical and some are mental, but the one that is both is dental. It is hard to be self possessed with your jaw digging into your chest. Now you see, students, there are tortures that are physical and some tortures are mental, right? So the poet is talking about two types of tortures. If you ever have got any type of disease or illness, sometimes you'll get the physical torture or sometimes you'll get the mental torture. But the one that is both is dental. But being at the dentist is both mental and physical at the same time. एक ही समय पर दो तरह के टॉर्चर्स होते हैं, मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता है. वन कैन नेम दीज टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स एज डेंटल टॉर्चर्स. If the one has gone to the dentist shop, so these both tortures are there. One suffers physical torture in the form of pulling and pushing, pressing into the gum, as well as the mental torture of an uneasy sitting posture. अगर आप शॉप पे गए हो तो वो दांत को कभी पुल करते हैं, कभी पुश करते हैं, गम्स को दबाते हैं, राइट, फॉर चेकिंग द टीथ. और मेंटल टॉर्चर क्या कहता है, uneasy sitting posture. Uneasy sitting posture, when you go to dentist shop, there you'll find the way of sitting of the patient is very weird. That's really mental torture. With wide open mouth and jaw digging into one's chest. अपने मुंह को पूरा खोल के इस तरह से, इस तरह के पोस्चर में बैठना, पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखना, संभालना, ये बड़ा मतलब अनकंट्रोलेबल सा लग रहा है. दैट डजंट सीम टू बी कंट्रोलेबल, राइट. और वो जो है माउथ के अंदर जो है कुछ ना कुछ चेक करता रहता है, गम्स को दबाता रहता है. द वन डेंटिस्ट बेसिकली. So hard to retain your calm when your fingernails are making serious alterations in your life, lifeline or love line or some other important line in your palm. Here, in this extract, in this stanza, the poet is unable to keep his calm nature while sitting in the dentist's chair. और जब वो डेंटिस्ट की चेयर पे बैठा होता है हमारा पोएट, वो अपने काम नेचर को सेट नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, अनेबल है उसको मैनेज करने में. एक्सट्रीम पेन मेक्स हिम डिग हिज फिंगर नेल्स डीप इनटू हिज पाम. जो फिंगर नेल्स हैं उसके बेसिकली, वो जो उसकी पाम में जो है मुट्ठी, जैसे कि जस्ट इमेजिन कि वो मुट्ठी को जो है, फिस्ट को जो है टाइट कर लेता है, और जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो ये पाम जो हमारी मुट्ठी होती है इसमें जो है धंस जाते हैं, डीप अंदर तक चले जाते हैं, इतना पेन होता है. The poet is thus humorous. He is talking humorously when he says that he is making serious changes to the various lines to his palm. और उसकी पाम के अंदर कितनी लाइंस होती हैं हथेली के अंदर, और उन सब को प्रेस करता रहता है, दबाता रहता है. And altering the course of his future by digging deep into his palm. And now what we get here, उसकी हथेली में जो दूसरी लाइनें हैं उनको भी जो है वो दबाता रहता है, प्रेस करता रहता है, जब उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसकी हथेली की जो लाइनें हैं वो चेंज होती रहती हैं. ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज, राइट. और जो अदर लाइफ लाइन है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है व्हेन यू गो टू द डेंटिस्ट शॉप. Poet is making humorous of the dentist by his own lines or words.
So hard to give your usual effect to cheery dignity when you know your position is one of the two or three in life most lacking in dignity. So hard. Here, the poet says that it is very difficult to retain one's cheerful nature. Means अगर किसी का अच्छा नेचर है cheerful nature है so that becomes very difficult for the one to manage this nature. उस नेचर को मैनेज करके रखना मेंटेन करके रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भाई राइट lacking means missing or missing not present or dignity means like it talks about calm and controlled nature of a person that is respected by others. Here what we understand when you are at the dentist's chair, it is one of the rarest of situations, बहुत ही कम होने वाले सिचुएशन है दैट लैक्स डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें जो है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी लैक करती है एंड वन कैन नॉट बी द सेम काम एंड डिग्निफाइड इंडिविजुअल इन द डेंटिस्ट चेयर. और वो इसको क्या बताता है कि भाई अगर आप डेंटिस्ट की चेयर पर बैठे होते हो, आपकी जो डिग्निटी होती है, आपका जो कंट्रोल्ड और काम नेचर होता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हो. इफ़ यू एवर गो देयर, पोएट अपनी बात बताता है कि भाई अगर मैं जाता हूँ तो मुझसे तो ये सारा मैनेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, कहीं ना कहीं गया हुआ होता है. नेचर इज नॉट कंट्रोल्ड और लाइक विच इज़ रिस्पेक्टेड बाय अदर्स. जो डिग्निटी है उसकी वो कहीं ना कहीं मिस हो चुकी है, प्रेजेंट नहीं है उस समय पर. And your mouth is like a section of road that is being worked on, and it is all cluttered up with stone crushers and concrete mixers and drills and steam rollers, and there isn't a nerve in your head that you aren't being egged on. Now you see, students, what we understand here, what poet talks about it, the poet exaggerates the work of the dentist, saying that exaggerates means बढ़ा चढ़ा करके बातों को explain करना बताना. That his works are similar to that of the repairing of the road. जो ये डेंटिस्ट का काम होता है इस तरह का होता है जिस तरह से कि रोड को रिपेयर किया जाता है. It is a mess with stone crushers. Stone crushers means जो ये छोटे छोटे हमारे दांत होते हैं, स्टोन क्रशर्स, उसका जो काम है वो उन स्टोन्स उन दांतों को क्रशर करना, कंक्रीट करना, जमाना, मिक्स करना, ड्रिल करना. एंड स्टीम रोलर्स. नाउ यू सी जो ये लाइन दी गई है, देयर इज इंटर नर्व इन योर हेड that you aren't being egged on. It means as if annoying every nerve in your head. वो क्या करता है कि आपके हेड में जो भी नर्व्स हैं उनको annoy करते रहते हैं and they work on themselves. और वो उसको कंपेयर किया गया है जिस तरह से कि रोड को जो बनाया जाता है, रोड बिल्ड किया जाता है. द पोएट exaggerates the equipments are used by the dentist. और पोएट जो है जो डेंटिस्ट के द्वारा इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको भी काफ़ी एक्सेसरेट करता है, बढ़ा चढ़ा करके बताता है, उनको सिमिलर बोलता है जबकि इक्विपमेंट्स रोड बनाने में यूज होता है. व्हेन द रिपेयरिंग ऑफ योर टीथ गोज ऑन, एवरी वन ऑफ द नर्व sinews and muscles are troubled and under attack. जो हमारी नसें होती हैं, हमारे गन्स होते हैं, वो सारे के सारे अंडर अटैक होते हैं. Right, everyone? So, what we understand by this, the poet is comparing the working of the dentist with the workers of the one who's making the road. Oh, some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs, and others have things done to their gums. And your teeth are supposed to be being polished, but you have reasons to believe they are being demolished.
And here, what we find, the poet is making that the dentist attacks the patient with his thumb and press hard on their gums. अनफॉर्चुनेट इनफ मीन्स कहता है कि जो डेंटिस्ट है ना, जब हम दांत चेक कराने के लिए जाते हैं, हमारे दांतों के ऊपर हमला बोल देता है। जैसे कि हमारे दांतों को अपने थंब के साथ, अंगूठों के साथ, हाथों के साथ प्रेस करना, जोर जोर से दबाना गम्स को, एंड अदर्स आर थिंग्स डन टू देयर गम्स को दबा दबा करके प्रेस करना, एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड, बट एक्चुअल में व्हाट शुड टेक प्लेस व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, what you should do basically, the patient already under severe pain find it extremely horrible, right? And you go there to the dentist to polish your teeth so that he cleans and gives you the respite, rahat jisko hum bolte hain. But when the dentist works on the teeth, you've got every reason to fear that, बड़ा डर होता है इसके पीछे, that he is demolishing your teeth, आपके दांतों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। डिमोलिशिंग मीन्स डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली। ही इज दैट रफ एंड अनमर्सीफुल। अब वो जो है ना बड़ा रफ तरह का और निर्दयी आदमी है, इस तरह से, राइट एवरीवन। एंड the circumstance that adds most to your terror is that it's all done with a mirror. Because the dentist may be a beer, or as the Romans used to say, only they were referring to a feminine beer when they said it an osra. Here, the patient would naturally be terrified when he sees the dentist. जब भी पेशेंट जो है डेंटिस्ट को देखता है वो डर जाएगा। वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ मिरर, कि वो एक मिरर के साथ, मिरर की सहायता से जो है वो काम करता है। द पोएट देन कंपेयर्स द डेंटिस्ट टू अ बियर। इन दिस एक्सपेक्ट द पोएट हैज कंपेयर्ड द डेंटिस्ट विद द बियर, एक भालू के साथ कंपेयर किया है। द बियर अटैक्स इट्स प्रे। जिस तरह से भालू अपने शिकार के ऊपर हमला करता है, tears into them, molds them on their mangled remains or left behind. सी ना, जिस तरह से कि एक भालू अपने शिकार के ऊपर टूट कर पड़ता है, वैसे ही ये जो डेंटिस्ट होते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर टूट करके पड़ जाते हैं। वन कैन नॉट बी श्योर वेदर इट इज लव और हेट दैट गवर्न्स द डेंटिस्ट। कोई भी ये समझ नहीं पाता है कि वो डेंटिस्ट को प्यार करे, हेट करे, या फिर उसको किस तरह से गवर्न करे। वन हैज एवरी राइट टू सस्पेक्ट हिज इंटेंशंस। हर किसी के पास अपना एक रीजन होता है कि किस तरह से वो डेंटिस्ट को गवर्न करे, उसकी इंटेंशन क्या है। एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन, द रोमन्स यूज्ड टू कॉल अ बियर उसरा। बियर को जो है ना युसरा बोलते थे रोमन्स जो थे। रोमन्स के बारे में जो बताया गया, रेफर किया है, Yusra was a female here, but the dentist here is a male one. Yusra जो है फीमेल थी रोमन्स के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पर डेंटिस्ट जो है मेल है, जो हमारा पोएट जिसको रेफर कर है, नॉट द फीमेल वन। दैट्स व्हाई इट इज सैड। But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other? He won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror and forget that left is right and vice versa. Now you see here the poet once again brings in the use of mirror into our notice. Now, earlier also he used the mirror. Now also he is bringing this in our notice that mirror is used. How can one be sure the dentist won't mix up right and left while treating with the mirror? कि भाई हम इसको किस तरह से श्योर करेंगे कि जब वो मिरर में देखता है हमारे टीथ को, वो राइट को लेफ्ट से और लेफ्ट को राइट से मिक्स नहीं करेगा। The way you do when you try to tie a bow tie
with the aid of the mirror, मिरर की सहायता से जब आप ये टाई करने की कोशिश करते हो, बांधने की कोशिश करते हो, दांतों को कवर करने की कोशिश करते हो, वी ऑफन मिक्स अप आवर लेफ्ट एंड राइट। अब जब हम टाई बांधते हैं मिरर में खड़े होकर के, अगर हम स्ट्रेट में मिरर में देखते हैं, सो हम जो है लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट जो है मिक्स कर देते हैं with the help of a mirror. It would be a horrible situation if the dentist treats the wrong side and wrong teeth. ये बड़ी हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी अगर डेंटिस्ट ये भूल जाता है, देखो लास्ट लाइन में दिया हुआ एंड फॉरगेट द लेफ्ट इज राइट एंड वाइस वर्सा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। We have got too much pain in our mouth, though we cannot understand, but he makes mistakes, will have to suffer. Right, everyone? And then at last he says that will be all, but it isn't, because he then coats our mouth from cellar to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on a horse's hoof. The dentist would say after some time that it is all, but it is not the end. The dentist वो कहता है कि भाई ये अभी end नहीं है. There are more thing to come when one cannot trust a dentist. When you find that कि भाई अगर कोई किसी एक डेंटिस्ट के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो भी कोई एंड नहीं है, ओके और भी चीज़ें होनी है, देन ही कॉट योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ। कॉलर मतलब उसको सेलर को कॉलर उसने बोला है कि उसको पकड़ता है ऊपर से, टॉप से, और दबा देता है विद समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज जनरली यूज्ड टू पुट अ शाइन ऑन अ हॉर्स रूफ। यानी कि जो हॉर्स होता है जब उसके ऊपर किसी दूल्हे को बिठाया जाता है, उसको अच्छे से कवर किया जाता है, इस तरह से जो है वो डेंटिस्ट जो है आपके माउथ को पकड़ेगा, लाइट मारेगा, उस पर देखेगा, उसको चेक करेगा अच्छे से विद समथिंग दैट आई सस्पेक्ट। Here the poet is hammering a last nail into the reader's mind by creating a suspension against the dentist. Now he is creating suspension against the dentist. Does the dentist use the same substance that is used to put shine on the horse hoof? It is terrible thin. Then we need to take it very seriously, students, that students see how and with what the poet is just comparing the dentist. What sort of instruments are used by the dentist to just inspect the mouth of the one who's patient, basically. And you totter your feet and think, अपने दांतों को, अपने पाँव को जो है, अपने मुंह को जो है हिलाते रहते हो जोर जोर से। Well, it's all over now, and after all, it was only this once. And he says, come back in 3 months. Now you see, the dentist would say after some times, that is all. But it all talks about when you get your feet staggering and dizzy, it's all about to emit a sigh of relief, hopping. उम्मीद करते हो कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, everything is over and this was only for once, और ये केवल एक ही बार होना था, लेकिन बाद में डॉक्टर क्या कहता है, अनसिंपैथेटिक वे में, कम बैक इन 3 months, के 3 महीने में आपको जो है वापस आना है, आप 3 month में वापस आ सकते हो। And humorous effect is shown here in this poem, students, like the poet is just pulling leg of the dentist or like exaggerating the things, right? And this fate is, I think, the most vexed circle that thou ever sentenced. That man has to go continually to the dentist to keep his teeth in good condition, when the chief reason he wants his teeth is in good condition is so that he won't have to go to the dentist. Now you see, the poet is
पैथेटिक, बड़ा दयनीय तरीके से बात करता है। ही थिंक्स दैट इट इज अ विकसिस सर्कल, बड़ा कठोर सर्कल है, ये सर्कल है पूरे का पूरा, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। दैट द फेट हैज आस्क्ड हिम टू सफर, और उसकी किस्मत, उसके भाग्य ने उसे बोला है कि तुझे जो है सफर करना है। ओ फेट, उसकी जो किस्मत है, भाग्य जो है, उसने ये उसको दिया है कि उसे ये सफर करना है, पेन झेलना है। दैट मैन हैज टू गो कंटिन्यूली। Here, one goes to the dentist to keep his teeth in good condition, but being at the dentist is something that one wishes to forget and never wants to be in. तो इच्छा होती है कि हम एक बार डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने दांतों को अच्छी कंडीशन में कराएं, और उसके बाद हमें दोबारा न जाना पड़े। हाउएवर, फिर भी वो कहता है, द डेंटिस्ट लाइक अ स्नेयर दैट नेवर अलाउ वन फ्रीडम। और डेंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो कि दूसरे पेशेंट को जो फ्रीडम अलाउ नहीं करता है। When the chief reason he wants his teeth in good condition is so that he won't have to go to the dentist. Going to the dentist is an evil cycle that never ends. और ये जो साइकिल है डेंटिस्ट के पास जाने का, कभी भी एंड नहीं होता है। इट इज विद द होप ऑफ नेवर गोइंग, हर समय ये उम्मीद रहती है कि अब आगे मुझे नहीं जाना पड़ेगा। दैट डेंटल क्लिनिक अगेन, that one visit it, but it is a fact that one has to go to the dentist again and again. लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है कि हमें या किसी को जो पेशेंट है दांत का, उसको बार बार वहां पर जाना पड़ता है। द वन हैज टू गो टू द डेंटिस्ट teeth to keep teeth in good condition. So students, that's enough for today. If you want to ask anything, raise your hands. Otherwise, the lecture is over. You'll get the question answers for tomorrow's homework. There we'll see, you'll just need to complete your notebooks. In this week, we'll check the notebooks, students. This will let you know how we'll check the notebooks. Nobody wants to ask any question, though the poem is very small and humorous. Thank you very much for participating actively in the